yeah, 95 kg. And the thing is, मैंने 2 मील खाया, उसके बाद I thought 3 मील खाने के बाद मैंने weigh किया है. Having my pre-workout shake. We'll keep it very simple. 45 मिनट पहले मैं लेता हूँ. So whenever I feel that off season में before the workout I feel too much food. कभी-कभी workout के time पे I keep burping. So it's not a good sign to work out. So what I do is keep like on pre-contest I try to have a meal, but because you're always hungry. But so now I will keep 25 grams of protein which I get in one scoop. So one scoop of this, a little bit more. उसके साथ में I put half a banana and this. And yes, one more thing. So peanut butter. So yeah, peanut butter around 1 scoop में डालता हूँ. अगर आपको peanut butter कोई भी flavor का use it, so not a big deal. So I put good 1 tablespoon पानी. Okay. So this is my pre-workout shake. You get around 24 grams of protein, around 20 grams of carbs, and 8 grams of fat. What's up? What's up, YouTube? We are in the gym. Back करने वाले यार. Pre-workout done already. Start with pull-ups. Those set करेंगे around 15 reps, sorry. And then we'll start with lat pull down. Let's see how it goes. कल कोई दूसरा जिम का पास का ही था, so I got a call from Reflection Gym, so I'm here. तो आज back करेंगे. They have got some good equipment like a raw one. So let's do some good ones. So. Wider grip to get the width, okay? Or if you are a tall guy whose hands are long, I would prefer, it's not like आप wide पकड़ो तो you will grow, like you will have a width, or अगर narrow पकड़ो तो you will not get. So it's like I have a longer hand, right? So I'll try to hold this way, right? This is the path they pull. Second, जो height में छोटा है या maybe their hands are shorter, they will try to do the close one. As I'm a tall guy, I'm 6 foot, so I'll prefer doing wide grip around 12 reps. So moving to the first exercise, we'll do the wider grip, the straight arm pull down. We'll do around 15 reps. So now we'll move into the bent over row, the basic old school barbell bent over.
we'll do around 4 sets. 2 set warm up करेंगे and 2 set walking. So let's get into it. This one, yeah, it's got 10 से 12 repetitions and hey, what's up guys? So, मेरा competitor, the second आया था in my category and he deserves, I believe that he deserves a pro card very soon और मुझे पता है कि next show में इंशाल्लाह he will get the pro card. Has a very good physique. जैसे आप लोगों ने देखा होगा लवप्रीत और एक और जन के साथ कंपैरिजन हो रहा था, that is कृष्णा, the guy who is always क्या बोलते हैं थोड़ा अंडरग्राउंड रहते हैं, बाहर ज़्यादा दिखता नहीं है बट स्टेज पे बराबर दिखता है. सो काफ़ी सारे लोग शौक में थे कि कौन है वो बीच में जो इतना अच्छा कंडीशन लाया था. दैट इज़ कृष्णा प्रजापति. कृष्णा चौहान, you can search, मैं भी टैग करने वाला हूँ. And please go and follow. He's one of the best athlete in India, a future pro and pro shoe guy. So please go and support him. We have 3 sets, 15, no, 12 किया 2 से. This was kind of a little heavy, so I did 8 reps and yeah, that's it. काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक मीट एंड ग्रीट रखूँ. आई नो दैट एकदम से जल्दी से हुआ ये, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एक हफ्ते से करूँ. ट्राई टू लेट यू गाइस नो जो भी क्वेरीज है अबाउट आई शुड बी एबल टू गिव बैक. सो आई एम हियर, कृष्णा इज देयर. तो मैं चाहता हूँ कि और भी नासिक से लोग कम्पीट करें और नाम रोशन करें यार. मतलब हम दोनों अकेला नहीं, और भी लोग हैं राइट. सो यहाँ पर आओ, वर्कआउट करो एंड ही इज़ द बेस्ट मैन. तो बताएंगे आपको, अगर कुछ भी क्वेरीज है आपको बताएंगे. एक क्वेश्चन करें तुम्हाला बॉडी बिल्डिंग करेक्ट गाइडेंस इधर नासिक में आई थिंक देयर इज. सर अगर प्री वर्कआउट स्टार्ट करना होगा किसी को एज अ बेसिक, मतलब कि उसने कुछ 0 सप्लीमेंट्स से स्टार्ट कर रहा है, तो फॉर प्री वर्कआउट व्हाट शुड वी ट्राई? सो वी शुड गो फॉर BCAA और फॉर क्रिएटिन. Pre-workout is an entire different thing and EAA, amino acids, these things are to build muscle. So उससे आपको कभी एक 100% फोकस वो सब मिलेगा नहीं. अगेन प्री वर्कआउट की ज़रूरत भी नहीं है आपको, अगर आप 100% फोकस हो ऑलरेडी, इसकी ज़रूरत नहीं है फिर आपको. पहले तो आपको डाइट पे कंसंट्रेट करें, देन वो प्री वर्कआउट में पहले कैफे ट्राई करो, कॉफ़ी ट्राई करो, फिर एल-आर्जिनिन ट्राई कर सकते. तो ये सब जो फैंसी नाम है ना उसकी सब ज़रूरत नहीं है. हमने जब भी स्टार्ट किया था
एक वे प्रोटीन पे इनसे लिया था, है ना, एक मास गेनर लिया था, वो भी मैंने लेना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत है। इन्होंने मुझे बताया प्रोटीन लो, दैट विल ओनली हेल्प यू टू ग्रो। बाकी की जो भी फैंसी चीज़ें वो सब अभी आ रहा है। लोग क्या करते हैं, जिम जाने से पहले हमारे पास घर पे बोलते हैं मुझे ये EAA चाहिए, प्री वर्कआउट चाहिए, गेनर चाहिए, बट जो बेसिक फाउंडेशन है वो है एक वर्कआउट, राइट, उसके बाद खाना, बस उतना ही चाहिए, और रिकवरी, जितना आप रेस्ट करोगे आप इम्प्रूव हो जाओगे। हाँ, यस।